The next thing that we are going to discuss is in the stakeholder chapter is the duties, rights and interests of the stakeholders. Let's talk about that individually. We have already talked about the shareholders are the people who have invested into the business and they receive dividend whenever the business closes its accounts by the end of year, most probably. Okay, what is the duty of the shareholders? It's investing at the right time. Whenever business needs investment, they should take their money and invest into the business. What is their right? Their right is very simple, and that is interest of them too. That they receive the dividend by the end of the year. Whatever the profit has earned, उसमें जो भी हिस्सा उनका है, जो भी part उनका है, that should be paid to them on time. This is their interest. This is their right. And secondly, also their interest is the growth of the value of their shares. If someone has purchased a share of $150, he will also be expecting that the value of the share will increase to 170, 200, 250, because with the growth in the value of share, it will become easier for him to sell in the future and earn money out of that. Managers are those people who are the senior employees, most probably directors who are running the business, because in the public limited companies we have already studied that the managers and the shareholders are different people. Shareholders own the business and managers basically run the business. So managers are those people who are running the business. What is their duty? Their duty is very simple. It's putting an effort for the growth of the business. They should use their energies, they should use their skills for the purpose of running the business properly, managing the business properly, recruiting the employees properly, allocating the tasks to the employees properly, so that business functions might perform in a perfect or in a very good way. Because if all of the employees, all of the departments are performing rightly, then only the managers are justifying their jobs, justifying their higher salaries, justifying their bonuses that they receive at any growth of the business. Okay, what is their right and interest? Their right and interest is simple. They want business to grow. As I told you earlier, if the business is growing, it means the managers are performing good. So their CVs, their performance is depicted by the growth of the business, and they are also interested, that is not written here, into the high salaries, into the bonuses that they receive. इफ मैनेजर, अगर कहीं मैनेजर्स की जॉब जस्टिफाई करनी होगी तो हम हमेशा ये देखेंगे एज अ डायरेक्टर व्हाट ग्रोथ द कंपनी हैज परफॉर्म्ड इन हिज टाइम पीरियड. फॉर एग्जांपल, अगर हम देखेंगे कि कोका कोला की सीईओ जो थी, वो उसने कैसा परफॉर्म किया, जो इंडियन सीईओ थी 2000 1998 से लेके 2004 तक, तो हम ये देखेंगे कि कोका कोला ने 98 से लेके 2004 तक कैसा परफॉर्म किया. If Coca-Cola has performed extraordinarily, it means that the manager, the senior most manager, was performing extraordinarily. Okay, the employees are the people who are actually working on their job duties that are assigned by the managers. तो उनकी ड्यूटी क्या है? Whatever is their JD is, JD means job description, that is assigned to them, that you have to come at 9 a.m., you need to leave at 5 p.m. In that 9 to 5 p.m. time period, you have to perform this. There's a list of tasks, and their duty is to perform that task that are assigned to them. What is their right and interest? That they should receive a salary by the end of every month that has been promised with them, or their job is secure. By the end of every month, the company won't say to them कि अच्छा जी, the company is not performing good, so we are not recruiting you, we are not hiring you anymore, and your job is being made redundant. ये बहुत ही डेंजरस बात है एम्प्लॉयज के लिए. So if business is growing, it also means that the job is also secure. So ये job security is one of the basic aim of the employees. This is their right and their interest into the business organization. Okay. Then we have suppliers. We have customers first. Customers are those people who are basically buying goods and services from the business. Okay. Customers की ड्यूटी क्या है? If they buy something on credit, उधार पे वो लेते हैं, they should pay timely. उनको ये नहीं करना चाहिए कि हम वो डिलेज पेमेंट का टैक्टिक्स यूज करें and all that. But what is their right?
their right is continuous supply. If you buy something while coming back to home daily, तो आप ये चाहते ही होंगे कि वो स्टोर खुला रहे, एंड वेन एवर यू कम बैक, और आप अपनी लेफ्ट साइड पे गाड़ी पार्क करें और उसमें से सामान लें और घर जाएं। यू डू नॉट वांट कि हर दफा आपको नए स्टोर से लेना पड़े, बिकॉज आपका एक कन्वीनियंस लेवल डेवलप हो जाता है। एंड सेकेंडली, इस पे एक और भी बात अभी आपको बताता हूँ। सेकेंडली, दे वांट द प्रॉमिस्ड क्वालिटी। व्हाट डू वी मीन फ्रॉम द प्रॉमिस्ड क्वालिटी? जो भी आपने एक दफा क्वालिटी प्रोवाइड की है, दैट शुड बी कॉन्टिन्यूसली प्रोवाइडेड टू दी कस्टमर्स, बिकॉज अगर हम नहीं प्रोवाइड करते तो फिर एम्प्लॉयज वॉन्ट, द कस्टमर्स वॉन्ट बी लॉयल टू अस। अच्छा, about the continuous supply, that is right of the customers, we have two types of customers. One are we, like you and me, that buy their products not for the purpose of resale. The second type of the customers are those that are business customers. उनका जरा कॉन्टिन्यूस सप्लाई में ज्यादा इंटरेस्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, हाइपर स्टार, अल्फता, मेट्रो, ये भी तो कस्टमर्स हैं ना। किन किस के कस्टमर्स हैं? फॉर एग्जाम्पल, यूनिलीवर के कस्टमर हैं, प्रॉक्टर एंड गैम्बल के कस्टमर हैं, पेप्सी एंड कोका कोला के कस्टमर हैं। तो चूंकि वो पेप्सी दे आर सेलिंग एट देयर स्टोर, दे वांट पेप्सी टू बी कॉन्टिन्यूसली सप्लाइड। तो वो हमेशा उनकी कोशिश होगी कि डू एग्रीमेंट विद दोज पीपल ओनली, विद दोज सप्लायर्स ओनली, विद दोज बिजनेसेस ओनली, दैट दैट विल कंटिन्यू टू सप्लाई। बिकॉज उनको तो ये है कि कस्टमर आएगा और वो आके पेप्सी मांगेगा। इफ द पेप्सी इज अ गुड ब्रांड, तो फिर ये नहीं होना चाहिए एक दफा कस्टमर आए और उस पेप्सी मिल जाए और दूसरी दफा आए तो नहीं मिले। तो द बिजनेस कस्टमर्स आर स्पेसिफिकली इंटरेस्टेड इन द कंटिन्यूअस सप्लाई, और they do not want any delays in the supply. There is their interest into the business. Then we have suppliers. सप्लायर्स भी चाहते हैं कि उनकी ड्यूटी क्या है कि वो हमें कॉन्टिन्यूसली सप्लाई करते रहें। वेन एवर वी आस्क फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, तो वो ये ना कहें कि अभी शॉर्टेजेस चल रही हैं, कल देंगे, परसों देंगे। और देयर राइट इज वी शुड पे देम टाइमली। whatever is the promise date, when we set them कि हम आपको 30th जून को पे करेंगे, तो we must pay them on 30th, ताकि वो भी हमारे साथ राइटली ऑपरेट करते रहें। देन वी हैव बैंक्स। ओके जी, बैंक की ड्यूटी क्या है? बैंक को जब हम लोन लेने के लिए जाएं तो वो उसमें अननेसेसरी डिले ना करे। अगर हमारी क्रेडिट रेटिंग अच्छी है, इफ वी आर ऑलरेडी रीपेइंग देम प्रॉपरली, और हमारी जो है वो बहुत ज्यादा हमने उनसे लोन नहीं पहले लिए हुए और हम जितने लिए उनको टाइमली वापस कर रहे हैं, तो बैंक शुड गिव अस लोन्स। दिस इज देयर बिजनेस। बैंक हमें लोन क्यों देगा? क्योंकि उसने उसके ऊपर इंटरेस्ट लेना होगा, एंड दिस इज देयर बिजनेस। और उसको उस बिजनेस में उन्हें they need to pay the loans. ओके, और उनका राइट और इंटरेस्ट क्या है कि हम जो लोन के ऊपर इंटरेस्ट बनता है, दैट इज द कॉस्ट ऑफ द लोन, दैट इज द कॉस्ट ऑफ द मनी दैट दे आर गिविंग टू अस। हमें वो जो लोन है वो हमें उन्हें टाइमली रीपे करना चाहिए। जो जो भी इंस्टॉलमेंट की डेट है उसके ऊपर हमें इंस्टॉलमेंट देनी चाहिए, एंड द इंटरेस्ट दैट इज ड्यू ऑन दैट लोन वी शुड आल्सो पे दैट इंटरेस्ट। Coming back to the competitors, there should not be an unfair competition. That is the duty of the Pepsi should not make ads against the Coca-Cola. The Audi should not make ads against the BMW. The Apple should not make the ads against Samsung. They should not try to do unfair policies, opt unfair policies. For example, they should not threaten any retailers that if you give if you sell the product of the other competitor, we won't supply you. तो उन्हें ये नहीं करना चाहिए। In Pakistan, we have seen a lot of unfair competition policies opted by the competitors. Some larger brands has threatened the retailers that if you keep the product of the other competitor, तो फिर हम आपको अपनी प्रोडक्ट नहीं देंगे। तो वो रिटेलर्स, क्योंकि बहुत बड़ा मार्केट शेयर होता है किसी का, तो थ्रेटन हो जाते हैं बेचारे, वो दूसरे की प्रोडक्ट नहीं रखते। बट दिस इज अनफेयर। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। कंपटीशन को रिड्यूस करने के लिए, ताकि कोई नया कंपेटिटर ना आए मार्केट में, हमें बहुत लोअर प्राइसेस पे अपनी प्रोडक्ट्स नहीं बेचनी चाहिए। ये सब अनकम्पेरेटिव प्रैक्टिसेस और पॉलिसीज होती हैं। वैसे तो गवर्नमेंट भी कीप्स अ चेक ऑन दैट, बट स्टिल दिस इज द ड्यूटी ऑफ द कंपेटिटर्स दैट दे शुड नॉट डू दैट। और फिर जो राइट और इंटरेस्ट क्या होता है कि मार्केट शेयर हमारा बढ़े। लिसन, if the sales of Pepsi will rise, the sales of Coca-Cola will fall.
क्योंकि वो इतने एक दूसरे के डायरेक्ट कंपेटिटर हैं कि अगर एक कस्टमर एक प्रोडक्ट ले रहा है तो ही इज लाजमी तौर पे सेक्रीफाइसिंग द प्रोडक्ट ऑफ द अदर। तो वो कोका कोला छोड़ के ही पेप्सी ले। इफ द सेल्स ऑफ द मार्केट शेयर ऑफ द एप्पल इज ग्रोइंग, द मार्केट शेयर ऑफ द सैमसंग इज फॉलिंग, क्योंकि इसका मतलब है पीपल आर लीविंग दैट ब्रांड एंड बाइंग द अदर। तो इंटरेस्ट हमारा क्या होता है कंपेटिटर्स के केस में, कि हमारा मार्केट शेयर बढ़े, एंड वी ऑलवेज ट्राई टू इंक्रीज आवर मार्केट शेयर। और उसकी बहुत सी चीजें हैं दैट वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट व्हेन वी वर स्टडीइंग द चैप्टर नंबर 3, कि मार्केट शेयर बढ़ने से हमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलती हैं, हमारा जो है हमारी रेपुटेशन इंक्रीज होती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। देन द स्टेक होल्डर इज द गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट की क्या ड्यूटी है? गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड अस द इंफ्रास्ट्रक्चर, the roads, the network, the communication network, the security network, and if we face any problem there should be government departments that solve that problem. गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि when it announces the subsidies, so it should give the subsidy to the businesses fairly, not on the political basis, for example. तो सब्सिडी वैसे क्या होती है? सब्सिडी इज द फाइनेंशियल बेनिफिट दैट इज गिवन बाय द गवर्नमेंट टू द यूजुअली स्मॉलर बिजनेसेस और द बिजनेसेस दैट गवर्नमेंट वांट्स टू प्रमोट इन द इकोनॉमी। तो गवर्नमेंट की ड्यूटी ये है कि उन्हें हमें सिक्योरिटी नेटवर्क्स बना के देना चाहिए, रोड्स का नेटवर्क्स बना के देना चाहिए, कम्युनिकेशन का नेटवर्क्स बना के देना चाहिए। एंड इफ वी आर फेसिंग प्रॉब्लम्स, तो देयर शुड बी अ लीगल सिस्टम टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल, पीपल आर नॉट रीपेइंग अस, तो हम क्या करेंगे? हम गवर्नमेंट के पास ही जाएंगे और हम उस वो जो चेक्स हैं उनके जो उन्होंने हमें दिए हुए हैं और उसके अगेंस्ट वो पेमेंट नहीं कर रहे हैं, हम उन इश्यूज को रिजॉल्व कराने के लिए वी शुड यूज कोर्ट्स एंड ऑल दैट। तो गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो ये सब डिपार्टमेंट्स, ये सब चीजें बनाए ताकि ये जो प्रॉब्लम्स हमें ना आए। द गवर्नमेंट का इंटरेस्ट क्या है? द इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट इज टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट थ्रू दी प्राइवेट सेक्टर। जो बिजनेसेस होते हैं, जाहिर है वो छोटे से छोटा बिजनेस भी 1-2 एम्प्लॉयज को हायर करता है, द लार्जर बिजनेसेस हायर अ लॉट ऑफ एम्प्लॉयज। तो इससे मैंने अर्लियर टोल्ड यू दैट वन ऑफ द कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल। तो प्राइवेट सेक्टर के थ्रू हो जाते हैं, तो गवर्नमेंट इज वेरी हैप्पी विद दैट। If businesses grows, they produce more goods and services that actually give rise to the GDP of the economy, output of the economy, economic growth of the economy. And if businesses pay taxes, government use that taxes to its own objectives, for example development of the infrastructure, for example development of the security systems, to pay the salaries to the government employees or the government owned businesses को subsidize करने के लिए। तो गवर्नमेंट ऑलवेज नीड्स टैक्सेस। तो ये टैक्सेस गवर्नमेंट का इंटरेस्ट है इनटू द बिजनेस एक्टिविटीज। जनरल कम्युनिटी की ड्यूटी बहुत सिंपल है कि वो खामखा बिजनेस के मुतालिक स्ट्राइक्स मत करें। इफ बिजनेस इज डूइंग समथिंग रॉन्ग तो फिर तो सही है, बट इफ बिजनेस इज नॉट डूइंग समथिंग रॉन्ग तो उन्हें बिजनेसेस के मुतालिक दे शुड नॉट डू एनी अननेसेसरी स्ट्राइक्स। बट देयर इंटरेस्ट इज द जनरल कम्युनिटीज इंटरेस्ट इज द जॉब्स। उन्हें चाहिए कि वो उन्हें जॉब्स चाहिए, तो दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द बिजनेसेस दैट आर ऑपरेटिंग इन देयर एरिया के वेदर दे आर प्रोवाइडिंग देम जॉब्स और नॉट। Secondly, their interest is corporate social responsibility that we have already studied in chapter number 4. They want that business should participate in their community programs. They want that business would behave positively towards the environment. They want that business should not be exploiting employees and customers, etc., etc. So this is the interest of the um, general community towards the business. So this is a brief introduction to the duties, rights, and interest of the stakeholders towards the business.